Hello and welcome to the Very Impromptu podcast. And today we have another impromptu podcast. Today our guest is Anant Baba, who came here from India to converse with us and answer our questions about all things related to spirituality and the universe. So welcome. Thank you. Brought you here to Vancouver and what your mission is while you're here. मेरे को तो राह में उनसे मुलाकात हो गया और उन्होंने बोला मैं तो रीनो में बैठा था, रीनो में उनसे मुलाकात हुई और उन्होंने बताया मैं वैंकूवर में रहती हूँ, तो मुझे लगता है कि मेरा दाना पानी यहाँ पे मुझे खींच लाया है. Food and the water, as well as a beautiful woman. I definitely think I can relate to that. But tell us what it is about the food and the water that interested you. मुझे लगता है कि इंसान कहीं भी जाता है तो उसका दाना पानी और स्थान उसको बुलाता है, अपने आप से वो नहीं जा सकता है. Okay, very interesting. So I guess right from the beginning, I'm curious, what is something, that if you only had one thing to tell the world, what would you want to say? मैं कहता कि ये गॉड जो है संसार का रूप लेके हमारे सामने घूम रहा है. जिस गॉड को लोग ढूंढते फिरते हैं वो सब रूपों में हमारे सामने है. मैं यही बात बताता. लोग मंदिर मस्जिदों में ढूंढते फिरते हैं, वो हम सब के रूपों में हमारे अंग संग घूम रहा है. मैं यही बताता. ये मेरा अनुभव है. Knowledge is great and it's good to know things about the world, but tell me, how does that particular knowledge, how do we put that into practice? So what's a practical application of that knowledge that can help us? प्रेम से मानना है कि कंकर कंकर है शिव शंकर. हम सब कुछ एक एक पार्टिकल, सब कुछ हम जुड़े हुए हैं. हम सब कुछ मिला के एक हैं. सब कुछ मिला के एक है. आकाश में हम सिर्फ एक बुलबुले की तरह हैं, पानी के बुलबुले की तरह, और कुछ भी नहीं है. मेरा मानना है कि हर चीज़ परमात्मा है. वो हर चीज़ में वो जुड़ा हुआ है. हम सब उसके हर चीज़ में उसके दर्शन करें, हमारा जीवन आनंद से भर जाता है. और आप अपने श्वास पे ध्यान रख के भी उसको जान सकते हैं. Yeah, so I've definitely heard you talk a lot about the breath and about breathing. So what is the connection there? Like how does focusing on my breath impact my life? आप उस पे दो फिर देखना. आप ध्यान दो तब देखना. अब उसके बदलाव कैसे आता है ये दिमाग का विषय नहीं है. इस पे दोगे तो अपने आप आपका लाइफ बदल जाएगा. श्वास के साथ आप धीरे धीरे शांत होते जाते हैं और श्वास का और विचार का बहुत गहरा संबंध है. धीरे 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 आपकी बुद्धि जाके अपने आप अपने स्वरूप में शांत हो जाती है और सिर्फ आप ही रहते हो और कुछ भी नहीं बचता है. आप में जाके अपने स्वरूप में शांत हो जाती है. एकदम तरंग जाके लहर जो है जाके समुद्र में शांत हो गई. अब शांत हो जाओगे तो आपके सिवा कहीं कुछ भी नहीं है. ये सिर्फ दूसरा देखना ही हमारी सारी प्रॉब्लम की जड़ है. So would you say then that you believe that our thoughts are the problem? Our thoughts are the thing that separate us from source or from who we truly are, and that it sounds like the process of focusing on the breath is the way to get away from those thoughts, and that's what brings us back to wholeness. Am I understanding that correctly? को एक बुरा विचार आपको बुरा फील करा सकता है तो एक अच्छा विचार आपको आनंद भी दे सकता है. अच्छा विचार के लिए किसी ने मना नहीं किया है. प्रॉब्लम है राग और द्वेष के विचार. ये मेरा है और ये अच्छा नहीं है, ये विचार आपको प्रॉब्लम कर रहे हैं. राम तो रोम रोम में बसने वाला जो कंकर कंकर हर चीज में जो रह रहा है जो है वो राम है. जो हर चीज में मौजूद है, रम रहा है, मतलब हर चीज में वो है. जो भी दिख रहा है उसमें वो है. Yes, I'm trying to understand because you and I like the idea of the thought of that's mine or the thought of that's bad as being the thing that separates us from our true selves, and I can see the attachment on that. But at the same time, we just said some thoughts are good and some thoughts are bad.
So aren't we right at the beginning of this thing already doing that to ourselves by judging certain thoughts as bad and certain thoughts as good? आप कर रहे हो ना, जिसने अपने सत्य स्वरूप को जान लिया उसको तो समुद्र के ऊपर लहरें दिखाई दे रही हैं, विचार बस बनी है और उसी में है। लहर जो है पानी से ही बन रही है और पानी में ही शांत हो रही है, उठ रहा है, उसको देखने से सारा खेल समझ में आ जाता है। So where does the thought come? I mean, I guess what you're hearkening back to the thing that you just said about the water, and if we, and I'm just trying to verify my understanding. The place that it comes from is the same thing that it is, and therefore there's nothing to grasp onto. पानी नहीं, सब कुछ एक है। तुम पानी को छोड़ोगे तो हवा को कहोगे, हवा को छोड़ोगे तो सूरज को कहोगे, सूरज को छोड़ोगे तो मन को कहोगे। सब कुछ ऑल इन वन, वन इन ऑल। पानी का मेन रोल है, वो जीवन है। को कौन जानता है? जानता है कि आकाश है, सूरज है, यही एक काम है, बाकी सब काम बेकार हैं। अपने आप को आप जान गए तो आप शांति से, आनंद से इस धरती पे रह सकते हैं, और अगर अपने आप को नहीं जाना तो आप अशांत रहेंगे, आप वासनाओं से ग्रसित रहेंगे, आप द्वैत में रहेंगे, आप परेशान रहेंगे। उसका कारण है हम दूसरा देखते हैं, मैं अलग हूँ, वो अलग है, सब एक हैं। बात यही है, उस माँ जाके बात खत्म हो जाती है। हमारे दिमाग का खेल है। Yeah, I love everything that you're saying, and you know, I resonate with it. I guess the part that I'm trying to figure out is, like, I feel like I know a lot of this stuff intellectually, and what I'm trying to figure out is, like, how do I know when I'm at that point where, you know, I've achieved this, like I really know it, you know, as opposed to just intellectually understanding it, and what would be the process from for, you know, moving that knowledge from an intellectual type of knowledge. It's just Ram. The answer is just Ram to everything. No. Yeah, does that make sense, the question? राम भी उत्तर है, और अगर आप उसको समझना है तो ध्यान का अर्थ है कि ना आप कुछ सोच रहे हो और ना आप सोए हो, तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी। जो आपके अंदर है वो सब के अंदर है, ये सत्य है, बाकी सब सुव्यवस्थित लूटमार है। Yeah, it's interesting. I feel like I might be asking the wrong question, because it sounds like what I want is to know when I'll know. But I'm wondering if it's because knowing is an intellectual affair, and so, you know, is it a feeling? Is it like you know, you've arrived? Maybe there's not even an arrival. I feel like the whole concept is so slippery. You know, is it possible to know this thing? Is it possible to experience it and be like, oh yeah, it's like I'm here now. I've reached samadhi or whatever, nirvana or whatever the state is that we're going towards. फिक्र तुम मत करो, जब जागोगे तो आपको कोई शंका नहीं रहेगी। Do we have any questions from our studio audience? Yes. Can you awaken and then unawaken? Can you awaken and then lose that? कोई फल खाया, आपको पहली बार कोई फल मिला और आपने वो फल खाया और आप फिर सो गए, तो क्या उसका स्वाद भूल जाओगे? नहीं। तो फिर वो कैसे भूल जाए? एक बार हो गया तो गया, बस खत्म। नमक की डली समुद्र में कूद गई, अब नमक की डली कैसे बनेगी? There's such a tenuous aspect to all of these things. Like, it's like, you'll know when you get there. Like, are there signposts along the way that we can follow to? Because I think, like, a lot of people that are on a spiritual path, like, awakening is kind of the goal. But I feel like when you have a goal, you want the thing, and then generally you want it because you're lacking it, and so you're actually bringing lack into the situation, and so it's like this snake eating its tail, or this catch-22 that we can never really resolve. And so how do I get this thing that I want when I can't get it because I want it? चलते हुए हम रास्ते में हमारे अंदर हलचल होती है। जब आप कोई भी सफ़र कर रहे हो तो हवा में जहाज भी हिलता है, परंतु वो हिलने के बाद आपकी वापसी कैसे होती है? अगर वो समय बढ़ रहा है
तो आप गलत रास्ते पे हो। अगर वो समय घट रहा है कि आप हिले और एकदम वापस आ गए तो आप सही रास्ते पे चल रहे हो। So, my understanding from what I've heard from you so far, correct me if I'm wrong, but when I leave this place today, it sounds like your, if we want to call it advice, or your point of view is that, and this is actually something that I've been working on for years and not getting very far with it. So I'm wondering if there's a way to accelerate this. But it sounds like the idea is live your life without a running dialogue going on in your head. So you're focusing on the breath. You're not asleep, but you're not thinking. And this, my girlfriend knows, my friends know, like this has been a goal of mine for a while. And I've definitely noticed that, the less time in a day that I spend thinking, like obviously if I'm working on something, I'm going to be thinking, but the less time I spend thinking, the better I feel. And that's not a coincidence. But I definitely, like, days will go by and all of a sudden I'll pop up like, oh, right, like I've been thinking for days. So is there a, we always want a shortcut, right? Or some sort of a trick or something to make it easier. But yeah, how can I make it easier? लोग कहते हैं कि ईश्वर नहीं दिखता, मैं कहता हूँ कि ईश्वर के सिवा कुछ नहीं दिखता। करेंगे, परसों करेंगे, बाद में करेंगे। खेल है प्रभु, प्रेम हो जाए, फेत हो जाए तो। So no shortcut then. तो शॉर्टकट नहीं है मतलब। शॉर्टकट इससे ज्यादा ना वहाँ समय है ना दूरी है। I could do this if I wanted to, and if I'm not doing it, it means I just don't want it badly enough. Because like I said, I really feel like this is a genuine desire that I have. I understand the importance of it. But like I said, a day will go by and I'll just wake up and I'll be like, oh, I was thinking all day, like I didn't stop. So like, how do I incorporate this more into my daily life? मेरा ये सारी बातें दिमाग की है, मैं कह रहा हूँ सामने तेरे परमात्मा है, इस बात पे विश्वास कर ले, बात खत्म हो गई। We're wrapping it up. Yeah, so yeah, it's I like it and I hate it at the same time, because I recognize that like I'm in my own way, and yet feel like I can't get out of my own way. And what I'm hearing is that's all a product of my mind. It's bullshit, essentially. And I just got to do the thing. Just do the thing. कुछ छोड़ो और नाचो। Well said, sir. Well said. जो बीत गई उसको भूल जाओ, जो अभी से पीछे बीत गई, जो अभी बची है उसमें डांस कर लो। Thank you so much for coming all the way from India to do this podcast. आराम। Clearly what he came here for. Straight from India, got off the plane, came here, did the podcast, gets back on the plane and goes back to India. It's amazing, right? So you could be on the very impromptu. That would not be impromptu, actually, if that's how it worked out. But no, we're actually doing an event here today. Thank you to Jory for sitting down beside this man in Nevada and having a conversation and bringing him here. And we've really enjoyed listening to your wisdom. And I look forward to speaking with you more. जय राम जी की, जय राम जी की। हाँ। Shout out to anybody who's watching this right now. You too could be on a very impromptu podcast. Show up at Friends Quarters, have a good conversation, and we might just pull you in this room and you'll be on a podcast too. So thank you. राम। Ram. अनंत बाबा, हरिद्वार, उत्तराखंड, भारत, इंडिया। जय राम जी की।